Thank you so much, Women in Law, particularly Nida, for organizing this event and launching this report, which I think paints a bleak picture of the status of fair representation in justice sector. And it would be fair to say that it's not too different in other sectors of the economy as well. It's not just the justice system. So first, I'll like to only make 2-3 points and more focusing on how a case can be built for fair representation, right? Where do we go from here onwards? We've looked at the snapshot of how things are. We've looked at some of the issues that lead to this state of affairs, but how can a different case or an alternative narrative be built? So सबसे पहले तो let me say that I'm not gonna try to mansplain anything, because that's what sometimes we get accused of. This is a purely scholarly sort of submission, which is fairly genderless, I suppose. Second, I think that when जब हमने केस बिल्ड करना होता है फेयर रिप्रेजेंटेशन या किसी को, तो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड justice, and there is a moral question in justice to start. So for example, I'm always reminded of David Hume, एक ब्रिटिश फिलोसफर थे. तो उनकी कंटेंशन ये थी कि बचपन से ही बच्चों में एक इनेट सेंस ऑफ जस्टिस होता है. तो जब भी कहीं इनजस्टिस होती है तो उनको बहुत फील होती है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इनजस्टिस, चाहे किसी भी लाइंस पे हो, जेंडर की लाइंस पे हो, क्लास की लाइन पे हो, कास्ट, एथनिसिटी, किसी भी लाइंस पे जब उनके साथ ज़्यादती होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो उनको फील होती है, राइट. और अगर हम आए अपने रोज़मर्रा के उसमें देखें, अपना बचपन याद करें, तो यकीनन हमें भी कहीं ना कहीं या खुद या कोई हमारे अपनी किसी सिस्टर को देख के या किसी अपने दूसरे बच्चे के साथ हमें यकीनन कहीं ना कहीं फील हुआ होगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. अब होता ये है कि क्योंकि हम सर्टन सोशल सिस्टम्स में मूव कर रहे होते हैं, तो एट सम पॉइंट हम इम्यून हो जाते हैं, हम उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही होगा. और सबसे पहले आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने ये जो इनेट सेंस ऑफ जस्टिस है, जो कि कहीं ना कहीं हम सब ने फील किया होगा, जो हमारा सेंस ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस है, इसको इन्वोक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक मॉरल कंपस प्रोवाइड करता है जिसमें आप लोगों के साथ इक्वालिटी और एक्विटी के साथ डील करने का फैसला करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देयर हैज़ टू बी अ मॉरल केस फॉर इक्विटी एंड इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस. दैट्स नंबर वन. बट नंबर टू, हमें ये भी पता है कि दुनिया जो है वो मोरालिटी पे, या कम से कम सिर्फ मोरालिटी पे नहीं चलती, सिर्फ जस्टिस पे नहीं चलती. दुनिया में इनजस्टिस भी बहुत है और मोरालिटी के अलावा भी कंसिडरेशंस हैं. सो फॉर एग्जांपल, दुनिया इंटरेस्ट्स पे चलती है. तो देन देयर इज़ अ केस दैट नीड्स टू बी बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूटिलिटी एज वेल, कि जिसमें वी हैव टू सी कि अगर डाइवर्सिटी हो और जेंडर इक्वालिटी हो ऑन ऑल दी फोरम्स जो निदा ने हाईलाइट किए, कि जी बार काउंसिल से लेके बेंच तक और बार एंड बेंच एंड अदर प्रोसिक्यूशन सर्विसेज सो ऑन, कि उसमें डाइवर्सिटी जो है वो फंक्शनल तौर पे एक सोसाइटी के लिए किस हद तक ज़रूरी है और बल्कि कितनी इम्पॉर्टेंट है. तो उसमें अगर आप देखें, जो हमारा एक राइजिंग प्रॉब्लम है जेंडर बेस्ड वायलेंस का, उससे आप शुरू कर लें, और उसके अलावा आप जो हमारे लॉज हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं, सब कह लें, तो आई थिंक द सिस्टम इज़ डिप्राइव्ड ऑफ द बेटरमेंट और द रिफाइनमेंट इट कैन अचीव बिकॉज lack of diversity and lack of voices of deprived communities, चाहे उसमें women हो, उसमें religious minorities हों, उसमें ethnicities हों, ethnic minorities हों, and so on. So system gets deprived.
तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ फंक्शनल आर्गूमेंट के यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट के वाई द सिस्टम नीड्स. और अब तो मैं लेट मी से दिस कि जिस तरह से इकोनॉमिक हालात हम जिन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उसके बाद तो वैसे ही मुझे लगता है कि एक सिंगल अर्निंग हाउस होल्ड जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे एंड ड्यूल इनकम हाउस होल्ड्स की ज़रूरत है. आप किसी भी इंडस्ट्रियल मुल्क में US, UK, यूरोप के तरक्की याफ्ता से तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं, किसी जगह सिंगल इनकम हाउस होल्ड्स इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकते. और इसलिए जो हमारी अगर हमने अपनी इकॉनमी को इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है और हमने प्रोस्पेरिटी अचीव करनी है, तो सबसे बड़ा जो अनटेप्ड इकोनॉमिक रिसोर्स है वो 50% ऑफ वुमेन जिनकी मार्केट लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन निग्लिजिबल है. That is the biggest economic, more than CPEC, more than any big thing. I think this is the economic resource that can turn around Pakistan. So there is a huge developing economic case for it, and I want to just give you one example of Saudi Arabia, a country that was considered socially the most regressive in some ways, most conservative. You will be amazed to know actually in the last 5 years, Saudi Arabia was able to double its non-oil revenue from around 48 billion US dollars to 98 billion US dollars. Right? This from non-oil sources, and 70% of this increase was fueled by the small and medium enterprises that they emphasized on and supported heavily in the last 5 years. 38% of their SMEs are either women-led or women-owned or women, contributing. So this is, a shining example where a country as conservative as Saudi Arabia is making huge progress in, tapping the economic potential that lies. So I think still realization is lacking. We have to build this case, and I've personally worked from the platform of USIP and Police Awam Saath Saath. We have a program which focuses on bridging the gap between the communities and our police, and we worked on inclusion of greater women in police force. And we were, amazed to see from our experience. और हमने more than having these discussions, and these are also very useful, but we set ourselves the objective that we want to see X number of women wearing police uniform. That will be the metrics of our success. So we went to the police and we told them that we will shadow your recruitment. Whenever you go to a district, आप जब recruitment करेंगे, हम आपको shadow करेंगे. वहाँ हम women focused campaign launch करेंगे to find candidates जो कि वो apply करें, and then we'll handhold them all the way through the recruitment process. Now we did this in Swat and 5 other districts of KP. पता ये चला कि जी despite affirmative action, despite 10% legally earmarked seats for women, जब written test होता है तो it is gender blind. So that means that the women applicants, and that is more, big of a problem in places like Swat or newly merged districts, or जहाँ पे there are huge disparities between male and female literacy rates. तो पता ये चला कि, most of those women, even if they apply, for these posts, they still have to, in practice, compete with all of the applicants that have applied, because आपका marking system is gender blind. So therefore, हमारी एक intervention में we had around 60 women applicants. Only three of them were able to pass that test, and in practice there was no affirmative action. So I think while we highlight the importance of affirmative action, that needs to then translated into mechanisms कि जिसमें वो actually down to the level of recruitment
वो डिलीवर कर सके और वो जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है उस पे पूरा उतर सके. सो यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज लाइक दीज एंड वी वुड होप दैट यू नो वी forge these networks, we get organized, and that we are not just able to make a strong case for inclusion, but we are also able to assert adequate pressure, you know, through combining our strengths, through combining our efforts to lobby, you know, policy makers and decision makers that, you know, a wholesale change is needed right from the top down to the bottom. So I'll just end here, and I hope that the initiatives like these, Women in Law itself, and then the knowledge products that they have created, will lead to bringing, you know, all sections of the society, and will translate into the policy and legislative changes that we need. Thank you so much.